हेलो 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 एवरीवन। जस्ट कुछ देर में शुरू करते हैं। विल डू टॉप डाउन एनालिसिस एंड देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट एंड विल गेट स्टार्टेड।
Okay, hello everyone and welcome to another stream. आज वही same shit again. We will do top down analysis, उसके बाद trade write up and then we'll finish the stream. Okay, so yeah, hello and welcome to another stream and another day. How you guys doing? Hope you're doing well. So let's just get started. Just let me load the charts. There you go. All right. Okay. So chart has been loaded too. There you go. Cool. So hello everyone and welcome to another stream. Yesterday we took a really good trade. मैं बताता हूँ कहाँ पे हमने trade ली थी. It was a really simple trade actually, जो कि हमने किया था. And we entered right here on the break of this candle. जब session शुरू हुआ था तब हमने trade पे enter किया था and we made around 88 pip on this trade, 88 point on this trade. Okay, so what I'm gonna do right now, I'm gonna delete everything and then we'll do a fresh analysis and we'll see कि आज क्या हो सकता है. Okay, and if you are watching right now, please comment something to let me know that you guys are here. And total we have 6 wins in the stream for this month so far. Okay, and one of the trade was lost and yeah, that is it. Okay, so everything seems to be okay. Yeah, there you go. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Okay, just give me a minute. Hello, hello. Hello, 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 hello. Okay, so everything seems to be good right now, and I think I'm audible too. Okay, so there you go. Once again, we are looking at EURUSD. Let's just look at the news today, first of all, okay? Hello, hello. Okay, so it seems like we have today we have unemployment claims again at 1700s. Okay, so seems like there will be a lot of volatility in the market today. So I'm just going to write down that we have volatility today. So unemployment claims basically at 1700s. Okay, at 1900 यानी कि 7 बजे. Okay, so there you go. This will be our news today. And उसके बाद हमारा टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं. Just give me a minute.
ओके, हेलो हेलो। ऑलराइट, सो टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम वीकली में देखोगे तो मार्केट सिम्स टू बी बेयरिश। लेट मी जस्ट लोड द चार्ट। आज थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है, लेट मी जस्ट चेक द स्पीड। Okay, seems like speed तो ठीक है, but charts are loading really slowly. I don't know the reason. Okay, तो first of all we are going to delete everything and झटपट हमारा top down analysis करते हैं. First of all we're gonna see कि what are high and lows in this market, particularly most recent high and most recent lows. तो we'll see कि we have made the most recent resistance right here. उसके बाद हमने यहाँ पर एक somewhat support लिया था, but price just failed to hold. उसके बाद market is going towards this area right here. ठीक है, तो दिस इज़ माई नोटेड रेंज ऑन वीकली। इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे डेली में, तो यू विल सी। ओके, तो ऑन द डेली यू विल सी कि मार्केट इज अगेन बेयरिश एंड वी हैव सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस राइट हेयर, एंड उसके बाद वी हैव क्रिएटेड सम वॉट सपोर्ट राइट देयर। ठीक है, इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 4 घंटे के चार्ट में। तो ओवरऑल अगर तुम डेली देखोगे तो मार्केट सिम्स टू बी बेयरिश, ओके, इन द मोस्ट सिंपलेस्ट टर्म। इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 4 घंटे के चार्ट में, तो यू विल सी कि वी हैव क्रिएटेड सम काइंड ऑफ बुलिश मोमेंटम इन द मार्केट। तो 4 घंटे के चार्ट में देखोगे तो मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आता है वो है दिस राइट हेयर, मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस। उसके बाद मोस्ट रिसेंट सपोर्ट इज राइट हेयर, एंड दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ गुड सपोर्ट। इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 1 घंटे के चार्ट में। So you will see कि we have created some kind of support right there, and we have a resistance right there, okay, which is a really good resistance. So I think this can be considered as our daily range. There you go, this is our daily range. तो इसे mark कर लेते हैं हम। Simply we are going to mark this as close above and close below range. This will be my buy above level, this will be my sell below level, and I will just highlight them like this right here. Extended. There you go. There you go. Okay. ये कल वाली सेशन लाइन से इसे मैं प्रोजेक्ट कर लूँगा करंट टाइम फ्रेम में। There you go. Okay, so this is our noted range basically, and we have a clean structure to the left hand side, but we should not get cocky at the moment, and because the market seems to be bullish at the moment, so what I want to happen कि some kind of again resistance बने, एक resistance बने, and if that resistance break, then we'll see what action we have to take right now for the today's day. Okay, so this is basically our no trade range. This is my no trade range. There you go. एंड अब हमारा जो ट्रेड राइटअप होता है वो कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम न्यूज़ चेक करोगे तो वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एट 7 o'clock, मतलब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी शाम के समय में यूएस सेशन में, एंड it can lead to really violent movements just like this one. See, this one was similar to the movement we can have today. So overall market is in range. इसे डेली में देखेंगे तो previous day was kind of bullish but seems like a pullback. Okay, so that's what I'm going to write here. Previous day was bullish but seems like a pullback, and price may continue towards 69.65. Okay, so this was my analysis for daily. Basically मैंने क्या लिखा है कि market seems to be bearish and we can still get this target which is that 65-62 level. Okay, इसे further break down करेंगे 4 घंटे के चार्ट में। तो what I see right now on 4 hour chart that
market of course obviously have closed above this resistance, so it seems like market is bullish on 4-hour chart, and we can see a test of this levels, which is 7780. So I'm going to mark that as a target, and I'm going to write there key for today h4 seems to be h4 seems to be bullish. Okay, h4 seems to be bullish, and we can see price and we can hello chickpea, how are you? Seems to be bullish, and we can assume that price will be bullish for the day as well. इसे further break down करेंगे तो you will see on 1 hour chart we have created resistance at 7355 7355. So that's what I'm going to write down. I'm going to write down right here that I'm going to write down here key we have created a minor resistance at 7355. break of this resistance and test of the same shall push the price higher. Okay, shall push the price higher. Okay, for at least about 20 pip. So this is our buy scenario for today. For sell, I need break and test of 7246. It's going good. How are you? I hope you're doing well. I hope you're doing well. Okay, so for sell I need a break of 7246, which is this level right here. For sell I need break and test of this for about 20 pip to the downside. There you go. Simple हमारा एनालिसिस मैंने लिख लिया है. अब कंक्लूजन लिख लेता है. To conclude I'm looking for buy if 7355 breaks and test for about 20 pips. Simple. Okay, तो conclusion में वही लिखेंगे. I'm looking for buy if 7355 breaks and tests. Simple. Okay, our setup type will be testing support. Okay, testing support, and we will look for breaking previous candle high. If that breaks, that will be our trigger point. Okay, and about risking, we are going to risk about 0.5% because daily seems like bearish and on H4 market seems to be bullish. तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए वी आर गोइंग टू रिस्क अबाउट 0.5% ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड. ओके ओके, तो दैट इज़ इट. सिंपल आर ट्रेड राइट अप एंड आर ट्रेड एनालिसिस फॉर टुडे. इससे पहले हम हमारे कुछ रूल्स है जो हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जब तुम ट्रेड को एंटर करते हो, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, डू यू फुल्ली एक्सेप्ट द रिस्क ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड. मतलब जितना भी तुमने रिस्क किया है, जितना भी तुमने थैंक यू चिकपी. ओके ओके, सी ट्रेडर इज़ गुड नाउ. आई हैव हर्ड कि उसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होती है. तो या सो बेसिकली आर रूल्स आर कि अगर तुम रिस्क कर रहे हो तो उस रिस्क को एक्सेप्ट करो. उसका मतलब है कि अगर उस पर्टिकुलर ट्रेड में तुम्हारे स्टॉप लॉस होता है तो उस ट्रेड से तुम्हारी जो साइकोलॉजी है वो नहीं बिगड़नी चाहिए. ओके, उसके बाद हमारा सेकंड रूल है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट. ओके, मतलब कोई भी कभी भी आके कभी भी कितना भी मूव हो सकता है मार्केट में, कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है. तो
दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू नो। एंड तुम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बेसिकली, मेरे कहने का मतलब है। उसके बाद हमारा सेकंड रूल है कि देयर इज़ नो फिक्स आउटकम टू एनी ट्रेड। बेसिकली किसी भी ट्रेड में ट्रेड को एनालाइज करने के बाद उसके प्रॉफिट में जाने के चांसेस होते हैं 50-50%। तो किसी भी ट्रेड में हद से ज़्यादा रिस्क करना बिल्कुल बिल्कुल भी सेंस नहीं बना था। ओके, एंड इसलिए अपने मनी मैनेजमेंट से स्टिक रहो। उसके बाद हमारा थर्ड रूल है कि ऑलवेज स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ योर एज। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि जो भी तुम्हारी एज है, जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, उससे स्टिक रहो। उसमें ज़्यादा वेरिएबल्स ऐड मत करो, बिकॉज जितना तुम वेरिएबल ऐड करोगे हर बार, उतना तुम्हारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, जो एज है तुम्हारी, जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का, वो बिगड़ने लगेगा। ओके, उसके बाद अगेन अगर द मोर यू लूज प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग इंक्रीजेज। बेसिकली अगर तुम एक लूजिंग स्ट्रीक में हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग अ विन इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर तुम विनिंग स्ट्रीक में हो तो एक लॉस वाली ट्रेड करने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। ओके, एंड अगेन जो हमारा लास्ट रूल है कि अगर प्री लंदन में हमें ट्रेड नहीं मिली तो हमें लंदन ओपन में ट्रेड मिलेगी। एंड अगर लंदन ओपन में ट्रेड नहीं मिली तो हमें पोस्ट लंदन में ट्रेड मिलेगी। एंड अगर इन तीनों सेशन में ट्रेड नहीं मिली तो विल गेट अ ट्रेड एट पोस्ट न्यूयॉर्क और प्री न्यूयॉर्क। ओके, एंड द लास्ट थिंग राइट हियर, दिस इज़ आर साइजिंग नोट कार्ड। मेरी जो डेली की रिस्क लिमिट है इट इज़ अबाउट 2%। यानी कि अगर मेरा एक दिन में 2% से ज़्यादा का लॉस होता है तो आई स्टॉप ट्रेडिंग फॉर दैट डे। उसके बाद अगर मुझे कोई A+ सेटअप दिखता है तो आई एम गोइंग टू रिस्क अबाउट 1%, जैसे कि हमने कल किया था ये वाली ट्रेड में। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी A ट्रेड है उसमें आई एम गोइंग टू रिस्क अबाउट 0.5%। and I will stop the trading for the day if I see my risk getting above 2%. Okay, so that is it for a simple top down analysis today. अब मैं इसे साइड में कर देता हूँ। there you go there you go, this is our planning for the day and this is our analysis for the day. इसे अगर एरो फॉर्म में डिनोट करना रहा तो आई विल बी लाइक कि इफ़ आई सी अ ब्रेक ऑफ दिस लेवल एंड टेस्ट ऑफ दिस लेवल, आई विल go for buy, because again market is like market had a like huge break on the news right here. So there is probability कि market can go bullish, but if this not happens, we will look for sell on this particular structure. Okay, so this is our two analysis for the day. My primary analysis is this one. If we see a break of this high right here, I will wait for how candle is forming, and अगर मुझे candle form ठीक तरह से हुए दिखती है and I get a trigger, I will take buys for about 20 pip. So that is it for our simple analysis today. मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है, अगर तुमने उसे अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो एंड कमेंट करो, लाइक करो, ताकि वो वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली आस्क मी इन द चैट। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर आवर सिंपल एनालिसिस टुडे। आई विल बी लाइव फॉर अबाउट 1 hour and उसके बाद I'll close the stream. Till then, if you wanna send any charts to me, you can send it. मैंने वो किस तरह से करना उसका सारा प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा चार्ट एनालाइज करूँ तो तुम बेसिकली वहाँ से मुझे चार्ट भेज सकते हो। ओके, सो दैट इज़ इट, सिंपल टॉप डाउन एनालिसिस। अगर एक नज़र मारे गोल्ड पे तो gold seems like, okay, let's just start with weekly. Weekly is still bearish and we still have a target to reach which is about 1973. इसे further break down करेंगे daily में तो you will see कि again market seems to be bearish and we are moving towards this level 1973.611. इसे further break down करेंगे 4 घंटे के चार्ट में तो market seems to be bearish as well until this level right here breaks. So overall market seems to be bearish on gold as well until we see a significant level of some kind of structure break on at least 30-minute chart. ठीक है, so that is it for our top down analysis, that is it for our EURUSD analysis for today. And if I see any trade I'm going to be taking those trade live, and अगर मुझे कोई particular setup दिखता है तो I will call out in the stream as well. अगर तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें वो ट्रेड फॉलो करनी है तो प्लीज़ अपने मनी मैनेजमेंट को सिक्योर रख कर ट्रेड को एंटर करना। एंड या दैट इज़ इट फॉर अ सिंपल टॉप डाउन एनालिसिस। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली आस्क मी एंड विल ट्राई टू आंसर दैट।
Okay, seems like we can break above this level right here, but अभी कोई particular break नहीं दिखा है मुझे. तो I think what will be good is either to wait for close above this at rather than entering this trade immediately. Okay, we will be patient for this one. So there you go. We are on 30-minute chart. We are waiting for a closure above 1970 19 sorry, वी आर वेटिंग फॉर क्लोजर अबव 7355, जो कि मैंने यहाँ पर जिस तरह से मैंने अपने एनालिसिस में लिखा था. इफ़ यूल सी वी हैव right here 7355. If that breaks and test the level, we'll take a buy. And right now we are having a breakout, but we are waiting for candle to close basically. Okay, so this is our simple analysis today. अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो you can ask me, and this is what we are looking for today. And remember, what matters in what matters in trading is how you think the market behaves. Okay. आई थिंक जो सी ट्रेडर है उसमें डिफ़ॉल्ट मनी मैनेजमेंट टूल्स दिए हुए हैं, तो आई थिंक सी ट्रेडर इज़ मच ईजियर टू यूज़ देन MT5. बट बिकॉज वहाँ पर हमारे पास क्या इनफ प्रिफरेबली ई नहीं होते, इसलिए आई डोंट ट्रेड ऑन सी ट्रेडर. अदरवाइज सी ट्रेडर इज़ अ रियली गुड प्लेटफॉर्म, एंड वहाँ पे मैनिपुलेशन काफ़ी कम होती है. तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यूजिंग सी ट्रेडर. द अदर थिंग विच यू टॉक्ड अबाउट इज what's happening with funding pep. I think it's just a maintenance thing. बट अगर वो नहीं होती है बट अगर वो नहीं होती है तो अगेन फाइंड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग एंड स्टार्ट ट्रेडिंग देयर.
बिकॉज इस तरह की चीज़ें तो चलती रहती है, खासकर जो फंडेड प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होना आई गेस काफ़ी नॉर्मल है. हेलो. Okay, so seems like we are having a breakout, pretty good breakout actually. But and we have a candle close in about 59 second. So let's just see what happens and what decision we can take based upon this. First of all, of course, this is a good breakout, and I think if until the price comes back to either test these levels, I won't be interested in taking long because it can be a fake out as well. So what we are waiting for right now is some kind of pullback to happen, and then we'll take decision based upon that. And again, guys, if you're looking to read one more book, I have a recommendation. You can read Best Loser Wins. This one right here. I recently started reading this one. Pretty good book actually. अभी तो so far मेरे लगभग 2 chapter ही हुए हैं, but I really recommend this book if you are considering reading something about trading. It talks about psychology again. Basically, what I'll say कि this is a modern version of trading in the zone in the most simplest words. And after this one, we will try to read. Okay, before that, we have a nice breakout. Okay, so we have a pretty good breakout right here. If you see, candle has closed with no wick to the top. That means market can continue bullish, but and we have a really clean break of the structure. But let's just not get started. If you want to take risks, you can take a trade immediately, but I won't really recommend taking this trade because there are two things. First of all, US hasn't opened. Sorry, not US, UK. UK hasn't opened yet. ठीक है, मतलब यूके सेशन खुलने का है. इट ओपन्स अराउंड 1:30 PM. तो आई थिंक आई वेट फॉर दैट एंड उसके बाद देखते हैं अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेड मिलती है तो. बट यहाँ से स्ट्रैटेजी सिंपल है. व्हाट आई वांट टू हैपन कि प्राइस नीचे आकर सम काइंड ऑफ सपोर्ट बनाए एंड देन इफ प्राइस कंटिन्यूज देन वी विल बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस ट्रेड. बट राइट नाउ आई डोंट थिंक सो कि देर इज़ एनी ट्रेड. Okay, if you see 15-minute chart, we have a most recent support made right here at this point. Okay, so this is my region where I'm looking to buy EURUSD. Basically something like this. Okay, so until that happens, we are not taking any trade. So we have a clean break of this level, 73.55, just like we wrote down in our trade write-up. अब बस एक ही चीज़ बाकी है. इफ़ आई सॉ अ फ्रेश रेजिस्टेंस ब्रेक, मतलब एक बेसिकली एक रेजिस्टेंस चाहिए यहाँ पर, एंड अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है देन विल टेक ट्रेड. अदरवाइज वी आर नॉट गोना टेक दिस ट्रेड एंड विल जस्ट लेट दिस वन गो.
एंड रिमेंबर गाइज यू हैव टू ट्रेड इन द नाउ मोमेंट। नाउ मोमेंट का मतलब क्या होता है, प्रीवियस जितने भी एनालिसिस तुमने किया है एंड करंटली जो तुम एनालिसिस कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब दोनों ही बिल्कुल भी अनरिलेटेड है। सो जस्ट बिकॉज यू सॉ अ ब्रेकआउट मूव इन योर फ्लेवर इट मूव इन योर फेवर, इट डजेंट मीन कि तुम्हारा वो पर्टिकुलर एनालिसिस सही था। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर structure to be formed and you have to trade as closely as your plan। मतलब जो तुमने स्ट्रैटेजी बनाई है जितना हो सके उतना क्लोजली उसके साथ ट्रीट करने की कोशिश करो। ओके, तो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर अ फ्रेश रेजिस्टेंस टू बी फॉर्म्ड। ऑफ कोर्स दिस कैंडल कैन बूम बट अनलेस वी हैव अ लंडन ओपन आई डोंट थिंक सो कि वो होने वाला है। तो वी आर जस्ट वेटिंग राइट नाउ फॉर सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर टू बी ब्रेक एंड एट 15 minute chart। Okay, and if you have any question like why I'm not taking this trade or something like why you should take this trade, you can just ask me। Okay, एक रिसेंटली मुझे क्वेश्चन आया था कि तुम न्यूज़ को किस तरह से एनालाइज करते हो। ओके, कल वैसे तो मैंने उस पर सारा वीडियो बना रखा है बट अगर तुम्हें एक बेसिकली इंसाइट चाहिए तो बेसिकली तुम्हें फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि मुझे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स किस तरह से ट्रीट करना है वो फिगर आउट करना है, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ लाइक क्लिक हेयर, दिस इज़ forexfactory.com। अगर तुम्हें नहीं पता तो ये साइट में जाके तुम न्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हो। ओके, सो देन यू सी दिस डाटा। ओके, एंड उसके बाद ये डाटा को तुम्हें अपनी एक्सेल शीट में कॉपी करना है एंड उसके बाद अगर तुम्हारे पास कोई सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है तो उस पर्टिकुलर डेट में जाके उसे ट्रेड करने का प्रैक्टिस करनी है। एंड तुम जितने बार वो प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी एक्यूरेसी उतने बढ़ने लगेगी एंड एंड ऑफ द डे यू विल बी प्रॉफिटेबल। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ साइट विच कैन टेल यू न्यूज़, दिस इज़ अ रियली गुड साइट जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ओके, और भी साइट है जैसे investing.com या BB Pips और समथिंग लाइक दैट बट आई डोंट रियली यूज़ देम। ठीक है, सो देयर यू गो, दिस इज़ आवर यूरो ट्रेड। अभी तक कोई ट्रेड मिली नहीं है तो वी आर जस्ट वेटिंग अंटिल सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस has been formed। Okay, seems like price is coming back but we still have like 25 minutes to go till this candle closes, so we are going to wait until that happens। And again, if you have some kind of question or some kind of analysis you want to share or what your views are, you can share them at the chat।
Okay, so what we are gonna do right now is wait for. Okay, the plan is really simple. What I'm gonna do right now is wait for price to come down, and if this area start to break, I'll take a buy. Okay, जैसे कि हमने discuss किया था. So that is it. I think I'm going to close out the stream right now, and strategy is pretty simple. If I see next candle breaking above this high, I'll take a buy. Okay, and if there's any question you can ask me on the chat, and I'm just going to turn off the camera, but I will be live, so you can ask me any question if you have any. Okay. Hello. Okay, so I am live in this form. If you have any questions or anything, you just ask me. Okay, so yeah, there you go. I personally haven't worked with them, but I think they are okay. As long as you are getting a payout, they are okay. मतलब मैंने कभी यूज़ तो नहीं किया है, but I think I've seen people using 5% and seems like they are good prop firm company. But what I recommend is choosing a company which is not based on US. I don't know where 5%ers are based upon, but if they are based on US, I don't recommend trading with them. So go for someone who is registered in, let's just say, Dubai or UAE. So funded next can be a good thing, or my Forex fund तो बैन हो गया ना, I guess. तो I work with let me just go. I work with my funded FX. That one is good. My Forex fund तो बैन हो गया है. My funded FX is pretty good if you are looking for a prop firm challenge basically. Really? I did not knew that. So I think it will be up in some time. हो सकता है एक नॉर्मल मेंटेनेंस ब्रेक हो, अनलेस लाइक ट्विटर में जाके चेक करो इफ किसी तरह का उन्होंने वार्निंग वगैरह दिया है क्या. बिकॉज अभी तक कोई किसी तरह की रेगुलेशंस नहीं आई हैं जो फॉरेक्स. या एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. तो आई गेस अगर मेटा कोड्स वो कर रहा है ना, उसके कारण फॉरेक्स में लाइक अच्छी स्टेबिलिटी आएगी, एंड आई थिंक दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट. एंड जो सी ट्रेडर है वो तो बेसिकली जो वेरीफाइड ट्रेडिंग करते हैं उन्हीं के लिए प्लेटफॉर्म. तो आई थिंक अगर तुम सी ट्रेडर में पुश कर रहे हो तो दैट इज़ अ गुड थिंग. बट एंड ऑफ द डे आई थिंक यू शुड एटलीस्ट ओपन योर ओन अकाउंट एटलीस्ट फॉर $1,000, जिसके कारण तुम एटलीस्ट खुद के चैनल्स को फंड कर सको.
Really? Let's go at Twitter and see what's going on. What's the company name? Funding Pips, right? Let's just see the Funding Pips Twitter. Well, कुछ दिख तो नहीं रहा. I'm not sure man क्या हो रहा है. I don't understand actually क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा. Yeah, that is a good thing. MT5 is a good thing. You can switch your brokers to either MT5 or something like that. Yeah, so basically what they are doing is this shifting to C8. I don't think कि जो तेरा account है उसे कुछ भी होगा. You will get a new account at the same uh, with the same amount you had last time, I guess. So don't really worry about it. Your money is safe. इनका कोई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नहीं है, देखो. Well, hopefully your money is safe. Yeah, I totally understand. Even अगर लाइक कल को मेरा ब्रोकर अगर बंद करता है MT5 या MT4, तो आई विल कंसिडर स्विचिंग brokers as well, because I've been trading all my life on MT5 or MT4, so I totally understand what your point is.
Yeah, totally. I totally understand. But I think what MT5 is doing is good. It's a good thing for brokerage for like firms because recently क्या हुआ था कि बहुत सारी जो फेक ब्रोकर्स है ना वो काफ़ी रजिस्टर्ड हो गए थे एंड जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर MT5 to take this type of actions. These are ये अगेन सी कई बार क्या होता है कि सिमुलेटेड फंड्स देते हैं ना ट्रेड करने के लिए. तो जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो बेसिकली एलपी होता है तो लेट्स जस्ट से कि तुमने एक अकाउंट खोला कोई भी ब्रोकर के साथ. लेट्स जस्ट से तुमने एक अकाउंट खोला आईसी मार्केट्स के साथ. तो आईसी मार्केट जब तुम लीवरेज लेते हो, ठीक है, तो जब तुम लीवरेज लेते हो तो लेट्स जस्ट से कि तुमने लीवरेज लिया है 1:100 का. तो ईच ट्रेड में अगर तुम ₹1 इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो 99 रुपीज़ है वो एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर इन्वेस्ट कर रहा है. तो दैट इज़ व्हाट लिक्विडिटी प्रोवाइडर इज़. तो कमर्शियल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के ये होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा फंड होता है. जो बैंक्स होते हैं मोस्टली तो बैंक्स होते हैं जैसे आईसी मार्केट है वो वो जो ब्रोकरेज यूज़ करता है वो जो बैंक यूज़ करता है वो लाइक प्रोफेशनल बैंक्स है जो इंडस्ट्री में रहे हैं और जो नॉर्मल जो रिटेल ब्रोकर ब्रांड्स हैं उन पे आ सकते हैं जैसे कि एक्सनेक्स ऑक्टाफेक्स ये सब रिटेल है जो लाइक खुद का पैसा यूज़ करता है. वो बेसिकली इस लॉजिक में काम करते हैं कि ऑफ कोर्स 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर गोइंग टू फेल. तो वो उन्हें सिमुलेटेड कैपिटल दे देते हैं और खुद का कैप और उनका कैपिटल वो खुद यूज़ करता है टू पे द बिल्स एंड सच. तो या वही बात हो जाती है. तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू चूज़ अ गुड ब्रोकर. तो या okay guys, right now we have about 249 subs. If you're watching the stream, please consider subscribing to this channel and make it 250. Okay, seems like we are tapping down in our hit zone right now. But again, I'm not going to enter this trade immediately because it can go south as well. So we'll be just waiting for this particular candle's high to get broken. अगर वैसा होता है तो we'll take trade. Otherwise, we won't be taking any trade. Well, London session open होने में we have about 3 minutes left. तो देखते हैं उस पर्टिकुलर लंदन सेशन में क्या होता है. And based upon that we are going to take trading decisions. But so far I don't think so कि कोई particular problem है. Okay. And again, if you have any question, any queries, you can directly ask me.
So we will be streaming for more 30 minutes, and after that I'm going to close the stream. Okay, so if you have any questions or something, please consider asking them right now. So first of all, we came down, we are at hit zone right now. We can open a trade right here at this particular point, but I don't think that will be a smart choice because we are not sure if the market has picked its direction yet. So we are basically waiting for this particular candle to close. If the next candle start to break above this particular high, I will be interested in taking buys. Otherwise, we are just waiting and we'll wait until the news hits the market. Okay, so that is simply it. And if you are watching the channel, guys, please consider subscribing to this channel. I really appreciate you showing up for the stream and constantly watching my videos as well.
Okay, guys, seems like there is no particular trade today, so we shall close off the stream. I like to thank everyone who showed up. Let's just do a quick chess match and then we'll close off the stream, okay? And if you wanna play with me, share your IDs in the link and we shall do a match. Okay, so let's just get started. Okay, so let's play a 10-minute rapid and then we are going to close off the stream. Okay. Okay. Okay, seems like this guy is going to abort the match. Let's just see if we get a new play. All right. We're going to play Sicilian with this one. I'm gonna play this. Let's move the queen. Let's go for dragon. Okay, seems like a free piece. There you go. Okay, seems like a blunder. There you go. I'm going to take this. I think we should snipe from here. This angle right here seems like pretty good. Okay, the guy has just resigned and I guess we won the match. Let's play another one and see. Again, we are going to be playing Sicilian with this one. I'm going to take this. Okay, nice. Let's play this. Okay, good. I'm gonna do this. I'm gonna take this right here. Okay, okay, let's do this. Okay, pretty nice actually. Let's just take it right here. Okay. Okay, let's do this. Okay, now it's interesting. Let's take with this. Okay, right move at the wrong time. Let's bring out our pieces now. Let's do this. Pretty cool. Let's do this and open up this file right here. Next we're gonna do this. Okay, so far we are playing good. I think next we should just bring out our pawns and make some kind of plan.